ओके, इफ यू आर ऑन अ नंबर लाइन, अब अगर आप एक नंबर लाइन के ऊपर है, ओके, और यहां पर आपका कोई नंबर ए है, अगर स्ट्रेट लाइन पे बात करें, इफ वी टॉक अबाउट दिस स्ट्रेट लाइन, हाउ मेनी वेज आर देयर टू रीच दिस पॉइंट? देयर आर ओनली टू वेज, either I will come from the right or I will come from the left. Okay, I will reach this point either from right or from left. Okay, so what is the basic definition of limit? A function is said to have a limit at a if it approaches same value from both the sides of a. ये बेसिक डेफिनेशन है. मैं f पे लेफ्ट से आऊं या f पे राइट से आऊं, इट शुड अप्रोच द सेम वैल्यू. अगर ऐसा नहीं है तो फंक्शन की लिमिट नहीं होगी. ओके, देखिए, सपोज ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये कोई पॉइंट है 1. मैंने अच्छा सा फंक्शन बनाया ऐसे, और 1 पे उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, और फिर मैंने क्या करा, ऐसे फंक्शन ड्रॉ कर दिया. 1 पे कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, दैट इज व्हाई वी हैव एन ओपन सर्कल, देयर इज नो वैल्यू. यहाँ पर भी ऐसे ओपन बना दो, देयर इज नो वैल्यू. सो आप नोटिस कर रहे हो कि ये जब फंक्शन 1 पे लेफ्ट की तरफ आएगा तो यहाँ कहीं होगा, एंड व्हेन आई विल कम फ्रॉम द राइट ऑफ 1, इट विल बी समवेयर ओवर हियर. देयर इज अ जंप, यू सी, डज नॉट हैव a limit at x equals to 1. This function does not have a limit at x equals to 1. एक और चीज, to define limit at x equals to 1, to define limit at x equals to a, it is not necessary that the function should be defined at that point. Okay, it is not necessary that a function should be defined at that point. So a function, please write down these points, they may be asked in theory. A function may not be defined at a point, okay, but still have a limit at that point. So basically you should feel what a limit is. What is the limit? Limit is that value which a function approaches from both the sides of a point. Okay, if the left hand limit is equal to the right hand limit, then that common value is called the limit of the function at that point. Okay, ये है basic definition. If you want, you can write down this definition. This is the basic definition. In examination, you will be given functions to calculate the limits, and I will tell you how to calculate them. But this is the basic definition. Now, अच्छा, इसको लिखने का तरीका क्या होता है? लिमिट x टेंडिंग टू 1 x स्क्वायर. इसका क्या मतलब है कि मेरा फंक्शन है x स्क्वायर, और मुझे चेक करना है कि जब x अप्रोच कर रहा है 1 को, then what is the value of fx which f is approaching. ये मतलब when x is coming close to 1, what is happening to fx? Now this is a very simple function, so you know, in such function I just replace x. 1 square 1, finished. Suppose I'm asked what is limit x tending to 2, x square plus 4, 2 square plus 4, 8, finished. प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है जब यहाँ फंक्शन में गड़बड़ होती है. अब कैसे होगी? लेट्स सी. If somebody asks you what is limit x tending to 2, ये देखो, प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन ही आएंगे लिमिट में. ऐसे डायरेक्टली तो nobody is going to ask you. Okay, you're lucky if somebody asks you this. But you see, limit x tending to 2, x minus 2 and x square minus 4. Okay, now let's put x equals to 2. So I will have 2 minus 2, 2 square minus 4. So I'll have 2 minus 2, 4 minus 4, 0 by 0. इसका कोई मतलब नहीं होता मैथ में, ये अनडिफाइंड है. मैथमेटिक्स 0 by 0 हैज नो मीनिंग, अनडिफाइंड. अब क्या करें? सो क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे एंड कैंसल द कॉमन फैक्टर्स. दिस इज द फर्स्ट ट्रिक and this will work for you. So I'll have x minus 2, a square minus b square. So x square minus 4, so is equal to x square minus 2 square, x minus 2, x plus 2. So x minus 2, x plus 2 कैंसिल हो गया. अब रखिए लिमिट, x को 2 रखिए, 1 upon 2 plus 2, 1 by 4. See? So this question actually explains you that the function is undefined. Function 2 पे defined ही नहीं है, पर उसकी लिमिट है. Okay? So
First way, directly input the value. If it is defined, that is your limit. Second way, if we can find out common factors, अगर 0 by 0 form आ रही है, generally common factorization will work. Okay, then take out the common factor, cancel it, और बाद में x की value रखिए, whatever the answer is, that is it.